which has been created by the lack of action from the Supreme Court within. The bill has become a necessity for the dispensation of justice. Article 191 of the Constitution lays down that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Thus rules framed or to be framed by the Supreme Court are subject to the law passed by the Parliament. Government, by virtue of Article 191, has bestowed with the power to make a law with regard to the practice and procedure of the Supreme Court. In 1980, sir, Supreme Court rules were framed when General Zaulak's martial law was in force. इन इस रूल्स के नीचे खाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया कि वो बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट कर सके. जितने भी ह्यूमन राइट्स के केसेस होते हैं आज, वो खाली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी डिस्क्रेशन के अंदर आर्बिट्ररीली अपनी बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम बार एसोसिएशंस, bar councils, United Nations special representatives on independence of judges and lawyers, and even from the Supreme Court within by the Supreme Court judges, they have all expressed concern about the Chief Justice's arbitrary exercise of suo motu powers and denial of appeal of right to the aggrieved party. All of them have been calling for reform, but no action has been taken till date, either by the present Chief Justice or by the previous Chief Justices. In this background, इस बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए ये गवर्नमेंट ने ये बिल प्रपोज किया है, which is named as Supreme Court Practice and Procedure Bill Act 2023. ये बिल नेशनल असेंबली में मूव हुआ, वहाँ पर पास हो गया, उसके बाद सेनेट में आया, सेनेट में पास हो गया. इस बिल ने अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ने इस बिल को असेंट नहीं दी, इसलिए आपने आज ये जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया है. द बिल प्रोवाइड्स, सर मे आई सबमिट, बिल प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट which is within the jurisdiction of Parliament to legislate, and the Parliament can pass such legislation. Competency of Parliament to legislate stems from Article 70 of the Constitution, which allows Parliament to introduce and pass bills with respect to matters listed in the Federal Legislative List contained in the 4th Schedule of the Constitution. Moreover, Article 142, Clause A of the Constitution empowers the Parliament to make any laws with respect to the matters contained in the Federal Legislative List. Entry number 55, Part 1 of the Federal Legislative List, Parliament can legislate to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court and conferring supplementary powers on it. Supreme Court of Pakistan, in the judgment reported in the case of National Industrial Cooperative Credit Corporation, has reported in PLD in 2000 SCMR 561 has held. मैं पढ़ के सुनाऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है. The jurisdiction of the Supreme Court can be enlarged and supplemental powers can be conferred on the Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution and entry number 55 read with Article 142A of the Constitution, of the which leaves no doubt that the enlargement of jurisdiction and conferment of supplementary powers can only be done through the laws made by the Federal Legislature. इस आइन को सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को सपते हुए ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आज पेश किया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट को पावर है कि इस एक्ट को पास किया जाए. प्रपोज बिल क्या कहता है, लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं आपको अर्ज करूँ. प्रपोज बिल जो है सेक्शन 5 जो है इसका,
इनलार्ज करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको एक एपेलेट जुरिस्डिक्शन दे रहा है। कि आज तक ये होता रहा है कि 2 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठ के फैसला कर देते हैं और उन जजेस के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। ना इस्लामिक जुरिस्डिक्शन ना मॉडर्न जुरिस्डिक्शन इस बात की अलाउ करती है कि किसी भी फैसले के खिलाफ अपील ना हो, मगर आर्टिकल 184 के अंदर जो 2 जज साहिबान फैसला करते हैं वो एक आखिरी फैसला होता है, उसके बाद उसके फैसले की कोई अपील नहीं होती। इस कानून के नीचे अपील का हक दे दिया गया है। अब लोग अपील कर सकते हैं और ये अपील एक लार्जर बेंच को जाएगी जो 5 जजेस से ज़्यादा होगा। उसके अलावा आज तक जो हुआ है, इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स केसेस होते हैं, चीफ जस्टिस अकेले इसके ऊपर एक्शन लेता है जो कि बड़ा आर्बिट्ररी और विम्सिकल होता है। अब इस कानून के नीचे एक 3 मेंबर्स की कमेटी होगी, 3 मेंबर्स की कमेटी होगी जो कि ये फैसला करेगी कि इस केस को जजेस सुने या ना सुने, और इस जजेस की जो सुनवाई होगी इस केसेस की वो 3 नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, ताकि ये सही फैसला हो, ताकि सीनियर मोस्ट जजेस इसका फैसला कर सकें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो नई शिकें इसके अंदर डाली गई हैं, जो कि तमाम बार एसोसिएशन का, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकला का एक अरसे से डिमांड थी, मगर इसके ऊपर आज तक किसी ने ख्याल नहीं किया। आज ये होता है कोई केस का फैसला होता है तो उसका जो रिव्यू होता है वही वकील हेयरिंग कर सकता है, कोई दूसरा वकील नहीं कर सकता। ये आइन के मुनाफी है। आइन हक देता है हर लिटिगेंट को कि टू चूज अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। अब इस कानून के नीचे ये शिक डाली गई है कि रिव्यू के अंदर जो लिटिगेंट है अपनी मर्जी का वकील कर सकता है, और पर फोर्स उसको वही वकील नहीं करना पड़ेगा जो कि मेन केस के अंदर उसके आर्ग्यू किया है। उसके अलावा इसके अंदर क्या कहते हैं, और जो शिक अच्छी दी गई है कि अपना इम्पोर्टेंट जो दी है, पहले ये था कि जो अर्जेंट मैटर्स होते थे उसके अंदर दरख्वास्त दी जाती थी कि हमने इंटरिम रिलीफ लेना है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो है 1-1 महीने तक उन दरख्वास्तों को लेकर बैठी रहती थी। इसकी वजह से इंसाफ जो है नहीं हो रहा था, लोगों की हक तलाफी हो रही थी, और इसको मद्देनज़र रखते हुए इस कानून ने ये लिखा है, ये शिक डाली है कि 14 दिन के अंदर अंदर जितने भी अर्जेंट केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग के लिए मोहतरमा, यहाँ तस्वीर बनाना मना है। प्लीज डोंट यूज योर टेलीफोन फॉर पिक्चर्स। तस्वीर नहीं बनाई जाती यहाँ पे हाउस के अंदर। आप तस्वीर नहीं बना सकते, आपको रोक दिया जाए। मैं ये समझता हूँ तस्वीर कि ये जो लोग नारे लगा रहे हैं उन्होंने इस एक्ट को नहीं पढ़ा। अगर उन्होंने इस एक्ट को पढ़ा होता तो आज ये नारे ना लगा रहे होते। वकला की जो डिमांड है उसके मुनाफी ये नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो आवाम की ज़बान थी उसके मुनाफी ये नारे लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो बात कर रहे हैं ये आवाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं ये नारों के साथ। इनको चाहिए इस बिल का साथ दें और इस बिल को पास करने के अंदर हुकूमत का साथ दें, क्योंकि ये बिल जो है मैं समझता हूँ और हम ये साथ समझते हैं कि बिल जो है इट विल इनहैंस द जुडिशियल इंडिपेंडेंस which is the cornerstone of the Constitution of Pakistan by making suo motu powers not susceptible to the whims and arbitrary actions of the one man, and furthermore it takes away external influences, if any, bearing on the Chief Justice of Pakistan in the exercise of this power. Bill, as a matter of fact, has filled the vacuum. It has taken away appearance of dictatorship of one man, and which Justice Mansoor Ali Shah has called imperial court run by one man. Keeping all this thing in mind, I will urge this House to pass this bill unanimously. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Senator Janab Kamran Murtaza Sahab.